नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपन जदि आम चैनल को प्रथम आसन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी लाइक भल लगे वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। आपड़ जानते माननीय सुप्रीमकोर्ट जो निर्देश देती कर्मचारी हित जोटा देती से समस्त कर्मचारी जोटा कि लागू होता है, से राज्य कर्मचारी हूँ कि केन्द्र कर्मचारी हूँ। कहीं जो गोटे कर्मचारी जाए सुप्रीमकोर्ट को ताकू जो जजमेंटा दिखाई थाए से जजमेंटी गोटे कोर्ट्रु आउ गोटे कोर्ट्रे से रेफरेन्स हिसाब से व्यवहार करा जाए। हाईकोर्ट हो सुप्रीमकोर्ट हो सबु क्षेत्र में से केसटा को रेफरेन्स हिसाब से व्यवहार करा जाए। आप जानते एवं जो न्याय व्यवस्था समस्ते गोटे सूत्र बंधा। तो आज आम गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर विषय आलोचना करवा जोटा कि कर्मचारी हित में जोटा माननीय सुप्रीमकोर्ट ऑर्डर देते। तो से विषय आम चलतु आरंभ करवा आज खबरटी। तो ये आप देखिपे एम्प्लॉई आर एंटाइटल्ड टू एमएससीपी बेनिफिट ओनली आफ्टर कंसीडरिंग ऑल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन earned by them in the term of CCS RP rules जोटा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते कि जो कर्मचारी समस्त फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पाइला तापरे से एमएससीपी बेनिफिट जोटा प्रदान करा जिवो। तो से विषय कौन अच्छी संपूर्ण खबरटी आम देखा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एम्प्लॉई आर एंटाइटल्ड। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहते जड़े कर्मचारी जो बेनिफिट पाइब कौटे अंडर मोडिफाइड आश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो अच्छी स्कीम 2008 एमएससीपी ओनली आफ्टर कंसीडरिंग ऑल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन earned by them in term of the central civil services रिवाइज पे रूल जो अनुसार 2008 रूल अनुसार ताले गोटे कर्मचारी समस्त फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पाइला परे से एमएससीपी जोटा मिनिमम आश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जोटा अच्छी प्रदान कर। कोर्ट हेल्ड थस इन ए बैच ऑफ सिविल अपील which were concerned with the interpretation and implementation of the MSCP applicable with effect from September 1 2008 ठारू जोटा applicable होइछि। द टू जज बेंच जे अछंती सीजेआई संजीव खाना ता सहित जस्टिस संजय कुमार ऑब्जर्व द रेस्पोंडेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ MSCP ओनली आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन earned by them इन द टर्म ऑफ CCS RP रूल्स। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो अच्छी तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टा कौन हम अंडर द सेड रूल have to be accounted for and will be treated as financial upgradation earned for the purpose of reckoning 10 of interval at 3 assured financial upgradation in term of grade pay under MSCP से पाइबा को बाध्य। तो से अनुसार केस बैकग्राउंड कौन अच्छी आम जानले से ठीक से भलसे बुझी हे। तो द MSCP was considered by a bench of 3 judges of the Apex Court in a case of Union of India आ गोटे अदर्स भितर होता MB मोहन नायर जी अच्छा 2020 जोटा कि द अदर कनेक्टेड मैटर जोटा थिला। द जजमेंट एलाबोरेटली कंपेयर द MSCP विथ जोटा कि आश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम ACPS which was introduced in the effect from 9 अगस्त 1999 कंटिन्यू द रिमेन इन फोर्स टिल द अगस्त 31 2008 जोटे कि MSCP आरंभ होला। इन ए नटसेल द कोर्ट हेल्ड दैट द MSCP डिफर फ्रॉम द ACPS जोटा कि MSCP एवं ACPS ये दुटाक डिफरेन्स अटे विथ सेवरल आस्पेक्ट इंक्लूडिंग टू सिग्निफिकेंट वन। फर्स्ट द ACPS इनविसेज द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर एंड 25 ईयर रेगुलर सर्विस जोटा कि ACPS जोटा थिला सेटा 12 वर्ष और 24 वर्ष रेगुलर सर्विस पर दिया विदाउट 1 or 2 प्रमोशन at the case may be where the MSCP envisages 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन प्रदान करा जिवो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर सर्विस 10 वर्ष 20 वर्ष और 30 वर्ष। ताल 3टा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कर्मचारी मैंने पाइबे जोटा कि 10 वर्ष गोटे 20 वर्ष गोटे 30 वर्ष कोटे MSCP रे विदाउट प्रमोशन एंड कंटिन्यूइंग on the same grade pay for a decade. The second, the financial upgradation जो अच्छी under the ACPS was the pay scale of the next higher promotional post in the service, whereas under the MSCP financial upgradation was not with the reference to the next higher promotional post but to the next higher grade pay in the scale of pay
as notified upon the implementation of CCS RP rule जो अच्छी तो से अनुसार देखिए द डिसीजन इन MB मोहन नायर जो केस होता से केस कौन था सब्सिक्वेंटली फॉलोड एंड एलाबोरेटेड ओपन बाय द कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया RK शर्मा एंड अदर्स जो थी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड अनदर वर्सेस केस सुकेश कुमार अदर भितर गोटे केस होता यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स एंड वीरेंद्र सिंह भितर जोटा 2022 इन दिस केस upon implementation of the CCS RP rule some of the respondent who were working as pharmacists in the ordnance factory and the other who were working as a superintendent in the central board exercise it became entitled to non functional upgradation जो थी कि कौन कराई on completion of 2 or 4 year of service respectively in pay band 2 with grade pay 4200 and pay band 2 with grade pay 5400 respectively. The earlier pay scale before the grant of non-functional financial upgradation was with the grade pay 2800 out of 4800 respectively. The Supreme Court in the above context the case remarked we fail to understand how we can ignore the financial upgradation एटी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते केमी आम इग्नोर करिया फाइनेंशियल अपग्रेडेशन को व्हिच हैज ग्रांटेड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 2 year or 4 year service in the post of pharmacist or superintendent as the case may be for the purpose of deciding as to whether not the government employee would be entitled to the next financial benefit under MSCP. तो सही अनुसार देखिए the court added that to ignore the financial upgradation granted on completion of 2-4 year of service as pharmacist or superintendent would be contrary to the intent or purpose of the scheme. तो से अनुसार लास्ट टाइम देखिए ये कोर्ट को द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड दैट द यूनियन ऑफ इंडिया विल नॉट इफेक्ट एनी रिकवरी ऑफ एरियर फ्रॉम द रिटायर्डी दोज हु आर रिटायर्डिंग विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ता सहित देखिए इन अदर केस जोटा कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रे कहते अकॉर्डिंग टू द आपोज कोर्ट अलाउड ये शेष में आपोज कोर्ट अलाउड अपील्स एंड इश्यू द नेसेसरी डायरेक्शन ये नेसेसरी डायरेक्शन कराई जोटा कि कर्मचारी हित में कराई तो आज ये गुरुत्वपूर्ण खबर थिला जदि आपको खबरटी भल लगिला तो आप देखुवे ये द कोर्ट क्लारिफाइड दैट ये कोर्ट कहते द कोर्ट क्लारिफाइड दैट द पेंशन एंड द पे स्केल जो अच्छी व्हिच आर पेएबल शाल बी रीडिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट एंड विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम January 1 2005 ठारू अप्लाई कराया कही ता सहित जदि ये आम देखा इन अदर केसेस द रिकवरी मे बी मेड आफ्टर इश्यूइंग नोटिस टू द एम्प्लॉई कंसर्न व्हिच रिक्वेस्ट फॉर द प्रोपोर्शनेट रिकवरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 year may be considered depending upon the quantum of recovery which is to be made. We also deem it appropriate to direct that the appellant Union of India will not charge interest on the amount to be recovered as themselves had made the payment and the issue being debatable to ask the employee to pay interest at this distance point of time may lead to difficult both in calculation as well as in payment. It also directed. तो सहीटा कर्मचारी जोड़ा कहुई तो आम देखिले तो ये कौन कहुई नो डाउट सर्टन अनोमली मे बी अराइज बिकज ऑफ द फैक्ट दैट ACAP MSCP जो अच्छी डिड ऑपरेट ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड रे ऑपरेट होता द नेचर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वाज डिफरेंट द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वे आर डिफरेंट बट दिस कैन नॉट बी ग्राउंड और रीजन टू रिराइट और इग्नोर द एक्सप्रेस लैंग्वेज जोटा कि आम कहीपर MSCP जोटा अच्छी एंड द इंटेंट एंड पर्पज बिहाइंड द स्कीम रीड इन दिस लाइट वी हैव नो डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट अपील एंड सेटिंग असाइड द इम्प्रूव्ड जजमेंट इट नोटेड तो से अनुसार यहाँ कहीपर कर्मचारी गोटे खुशी खबर तो आज गुरुत्वपूर्ण खबर थी जदि आपको खबर भल लगे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करें शेयर करें भूलिए जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर धन्यवाद।